Hello everyone and welcome once again for another video that will help you decide which movies you want to add next to your watch list. आज हम बात करेंगे इस डिकेड की उन मूवीज के बारे में जो बहुत अंडररेटेड रही हैं और अच्छी फिल्म्स होने के बावजूद उन्हें ऑडियंस का प्यार नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे. This is going to be a list of 10 films that you should definitely watch for its uniqueness and its brave ambitions. So without further ado, let's jump right into it. फंस गए रे ओबामा. फंस गए रे ओबामा released way back in 2010. It is a satire set up in the backdrop of the global recession that originated in the United States of America. फिल्म में ढेर सारी कॉमेडी है और उसके साथ डार्क ह्यूमर का भी तड़का है. रजत कपूर plays Om Shastri, a businessman who has been kidnapped by Sanjay Mishra, aka भाई साहब, when he returns to India from the US. उसके बाद कहानी में बहुत से ट्विस्ट हैं और है बहुत सारा एंटरटेनमेंट. मनु ऋषि who plays Anni works for भाई साहब and is a huge fan of Barack Obama, and that's where the title of the film comes from. कहानी में नेहा धूपिया और अमोल गुप्ते के भी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं. फिल्म को अच्छी रिव्यूज मिलने के बावजूद इट डिड नॉट इवन रिकवर इट्स बजट. 6 करोड़ में बनी ये फिल्म सिर्फ अप्रॉक्स 3 करोड़ का बिजनेस कर पाई. इट इज नाउ अवेलेबल ऑन Amazon Prime. आंखों देखी. आंखों देखी इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स. 2014 में रिलीज हुई ये फिल्म संजय मिश्रा के करियर की शायद सबसे बड़ी फिल्म है. रजत कपूर ने फिल्म को डायरेक्ट करने के अलावा एक्टिंग भी की है. संजय प्लेज बाऊजी एंड अ रैंडम इंसिडेंट चेंजेस हिज एंटायर लाइफ एंड हिज आउटलुक टुवर्ड्स इट इन अ वेरी ड्रामेटिक फैशन. वो डिसाइड करते हैं कि आज से अभी से वो जो कुछ अपनी आंखों से देखेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी पर भरोसा करेंगे. Hence the title आंखों देखी. मैंने फैसला कर लिया है. उन्हें अपनी इस नई आइडियोलॉजी की वजह से अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है और वो अपनी थ्योरी एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं जिसका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ता है. रजत कपूर प्लेज हिज ब्रदर एंड their relationship has been portrayed in a very realistic manner. The film is full of philosophical undertones and the performances are exquisite. It would not be wrong to say that the cast has not played their characters but have lived the roles. काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलने के बाद भी 5 करोड़ में बनी ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का बिजनेस कर पाई. इट इज़ नाउ स्ट्रीमिंग ऑन Amazon Prime. अपनी आंखों देखी पे यकीन ना करें, दूसरे जो कहें उसको मान. Titli. Titli is a very unique and different kind of film, I would say. It released in 2014 and was co-produced by Yash Raj Films. It's a neo-noir drama that's extremely shadowy but is a great effort at filmmaking. Directed by Kanu Behel, Titli stars Ranveer Shore as Vikram, Amit Syal as Pradeep, Shashank Arora as Titli, and Shivani Raghuvanshi as Neelu. Titli is the youngest brother among the three and is also part of the carjacking gang in Delhi. Titli अपने भाइयों के साथ इस इलीगल काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता and he plans to escape. But life is not certain and he's forced to get married to Neelu played by Shivani. आगे की कहानी बहुत थ्रिलिंग और डार्क है एंड इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग फिल्म. द डायरेक्टर कैप्चर्स द वॉलेटाइल सोसाइटी वी लिव इन वेयर वायलेंस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. 5 करोड़ में बनी ये फिल्म सिर्फ 1.8 करोड़ का बिजनेस कर पाई एंड वाज अ फ्लॉप. वॉच तितली एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ इट. आना जरूर हमें देखने, भूलना मत. डैडी, बावला, विक्रम, नीलू, तितली. गौर हरी दास्ता. Gaur Hari Dasta is the real story of an Odisha freedom fighter, Gaur Hari Das, who made his way through a long battle of silent war that lasted for 32 years against his own government to prove his patriotic association towards the nation. 2015 में रिलीज हुई ये फिल्म गौर हरिदास के संघर्ष की कहानी है. विनय पाठक plays the protagonist and he proves his mettle yet again. फिल्म में कौन सेन शर्मा और रणवीर शोरे भी हैं and they pull their characters off with ease. The film also highlights the failure of the Babu system, the lines outside government offices, and the unheard voices of the common man. The honest storytelling and its relevance today will resonate with the viewers. The film collected just 18 lakhs and was declared a disaster. The film is now available on Netflix. आपको आजादी की सारी कहानियां याद होंगी. Antardvand. Antardvand was and still is a very important film.
2010 में रिलीज हुई इस फिल्म की स्टोरी आपको काफी अजीबोगरीब लग सकती है, बट इन रियलिटी ये इस देश की सच्चाई है। It highlights the cases of groom kidnapping in Bihar and UP, where eligible bachelors are abducted by the bride's family and are forcefully married to avoid dowry expenses. In 2009 itself, 1,224 kidnappings for marriage were reported. The film stars Raj Singh Chaudhary and Swati Sen in leading roles, while Vinay Pathak and Akhilendra Mishra play supporting roles. An aspiring IAS, Raghuveer gets kidnapped by a local strongman with the intention of forcing him to marry his daughter. The story moves at a brisk pace and shows us a mirror that we still live in a male-dominated society. It can be a bit depressing for some, but the silver lining is the climax that gives us hope. अंतर्द्वंद को बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज कैटेगरी में नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, येट इट वॉज अ डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस. द फिल्म इज नाउ स्ट्रीमिंग ऑन Amazon Prime. हमको काहे किडनैप करवाएं? 13 तारीख को तुम्हारा ब्याह है. Chittagong. Chittagong released in 2012 and is a historical war drama. The story is set in East Bengal of the then India, which is now Bangladesh. The British Empire was facing huge uproar from the revolutionaries during the 1930s. Manoj Bajpayee plays revolutionary leader Masterda Surya Sen. वो अपने क्रांतिकारियों की फौज के साथ चिटागोंग पर रेड करके शहर अपने कब्जे में करना चाहते हैं. The narration is done by Junku, played by Dalzad Hivle. The story revolves around Junku's 14-year version when he fights his inner demons and ultimately achieves what he wanted. मनोज बाजपेयी के अलावा फिल्म में जयदीप अलावत और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं. अंग्रेजी हुकूमत को करारा जवाब देने वाले क्रांतिकारियों को ये एक ट्रिब्यूट है, एंड द कॉन्स्टेंट पॉलिटिकल ड्रामा इज द एसेंस ऑफ द फिल्म. डायरेक्टर वेदाब्रता पाइन ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसे देखकर यू विल बी मूव्ड एंड ओवरवेल्म्ड. द फिल्म टेक्स टाइम बट नॉक्स अ सॉलिड पंच वंस इट गेट्स गोइंग. द परफॉर्मेंसेस डिजर्व्स अपलॉज एंड आर द यूएसपी ऑफ द फिल्म. Made on a budget of 5 crores, Chittagong just managed to collect a mere 35 lakhs and had a disastrous box office. But I would definitely recommend this to you. It is available on YouTube and iTunes. हम कामयाब ना हुए तो अगर हम कामयाब हुए तो I Am Kalam. I Am Kalam released in 2011 and is directed by Neela Madhav. Child actor Harsh Mayer plays Chotu, an underprivileged boy who gets inspired and motivated by India's erstwhile president APJ Abdul Kalam. He decides to change his name to Kalam and aspires to become like him. Though the protagonist is poverty-struck, the film at no point emphasizes on the inadequacy in his life, but is rather focused on his pursuit for knowledge. The cheerful face of Chotu and the upbeat mood of the film never makes the narrative distressing. The well-etched screenplay keeps you plugged throughout the 92-minute runtime. The biggest positive of the film is that it's deep-rooted to reality and doesn't go overboard even for a minute. This is a must-watch. 2 करोड़ रुपयों में बनी ये फिल्म अपना प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाई. The film is available on Netflix. हर बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है और राष्ट्रपति कलाम भी बन सकता है. क्या दिल्ली क्या लाहौर. ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मिसाल है. एक पैगाम है मोहब्बत की, अमन की, शांति की. Vijay Raj made his directorial debut with Kya Dilli Kya Lahore, which is a war film but ironically is an innocent take on border tensions between India and Pakistan. After a crossfire along the border, only 2 soldiers survive. One is an Indian soldier of Pakistani origin, while the other is a Pakistani soldier of Indian origin. And amidst continuous exchange of bullets, altercations and murkier situations, it evolves into a journey of human connection with an unpredictable ending. During such times when India and Pakistan are always at loggerheads, watching this film will make you feel good. 5.5 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 1 करोड़ की कमाई भी नहीं कर पाई. The film is now available on dailymotion.com. लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी. इन्हीं को अब बनाओ पाला और आओ कबड्डी खेलते हैं. Sony released on Netflix in January 2019 and is still one of the best Hindi films on the platform. Sony, played by Gitika Vaidya,
is a short-tempered sub-inspector who, along with a boss Kalpana, played by Saloni Batra, are meant to keep the streets of Delhi safe for women. Sony is impulsive and can't bear sexist treatment anymore and blows off every now and then. On the other hand, the character of Kalpana is yet another junior partner in the marriage despite being an IPS in the professional field. The film doesn't dramatize issues or answers important questions. It just feeds us reality, and that's very powerful. The direction by Ivan Ayer is really good and the one-take scenes are very well shot. ये फिल्म Netflix पर अवेलेबल है, so do watch it. कभी-कभी लगता है सब ठीक होगा। उमरता 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म राजकुमार राव और हंसल मेहता की जोड़ी की तीसरी फिल्म है। इनकी पहली फिल्म शाहिद को दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में अप्रिसिएशन मिला और फिर इनकी सेकंड एसोसिएशन सिटी लाइट्स को भी काफ़ी रिकॉग्निशन मिला। Unfortunately, Omerta was swept under the rug. It's a biographical crime drama that shows Rajkumar Rao playing Ahmad Omar Saeed Sheikh, a British terrorist of Pakistani descent. The abduction of Western tourists in India in late 1994, his arrest and imprisonment in Delhi, his release in exchange for the hostages in 1999, the kidnap and killing of American Jewish journalist Daniel Pearl in 2002, and his trial and conviction in Pakistan forms the entire plot. It presents in a detached and deadpan docudrama style the circumstances in which the dreadful terrorist executed his plans. Rajkumar gets into the skin of Omar Saeed in this riveting masterpiece. 12 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 3 करोड़ का बिजनेस कर पाई. But now when it's available on Z5, it's finally getting the appreciation it deserves. Do watch it. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलेंगे आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ. तब तक वॉच दीज फिल्म्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफर्ड जॉनरा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. Subscribe to the channel and press the bell icon for instant notifications.